She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life, but I got so much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time, but please don't stay the night. Don't try to change my mind, baby, please don't stay the night. I must do what's right, don't make me ask you twice. Ooh, don't stay the night. हेलो गाइस, वेलकम टू H9 ऑटोमोटिव। आज आपके सामने ये BMW की ऑल न्यू 3 सीरीज खड़ी है। ये गाड़ी का केस अलग है, फर्स्ट टाइम हम लोग ये केस फेस कर रहे हैं। गाड़ी कल ही PPF हुआ है, बट किसी ऑथराइज डीलर से उन्होंने किया था, वो बोल रहा है, बट क्लाइंट को ये काम पसंद नहीं आया, तो क्लाइंट ने हमारे पास ये गाड़ी फिर से भेजा है। हम लोग इसका PPF पूरा उतार के डिटेलिंग करके इसको अच्छे से और एक बार हमारा पर्सनल ब्रांड जो इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। जो पहला काम हम लोगों ने GLA का किया हुआ था, मर्सिडीज का, वी लव द वर्क एब्सोल्युटली, बट ये गाड़ी उन लोगों ने रिसेंटली जब खरीदा, उन लोग को शोरूम से कुछ डील दिया था कि XYZ अमाउंट का आप PPF हमारे से करवा लो तो हम लोग गाड़ी को जल्दी अलॉट कर देंगे। तो वो चक्कर में उन लोगों ने वहाँ से PPF करवा लिया। उसका भी डिस्कशन हमारे से हो गया था, बट आई सेड हाँ, इट्स अ गुड डील, BMW से हो रहा है तो 100% अच्छा ही रहेगा। बट जब भी PPF पूरा कंप्लीट हो गया, क्लाइंट ने हमारे पास गाड़ी दिखाने के लिए लाया, हम लोगों ने मीटर के ऊपर चेक किया गाड़ी, क्लाइंट को कमिट किया गया था 185 माइक्रॉन का PPF उनके गाड़ी के ऊपर अप्लाई करेंगे, बट एक्चुअली जो PPF अप्लाई हुआ है वो 150 माइक्रॉन का उनकी गाड़ी के ऊपर अप्लाई हुआ है। वो देख के क्लाइंट थोड़ा नाराज हो गए थे, उन लोगों ने डीलरशिप से बात किया, जो कुछ भी उनका बातचीत था वो हो गया, बट अभी उन लोग का यही फाइनल डिसीजन है कि उनको ये PPF पूरा हटाना है। जो उनके GLA के ऊपर हम लोगों ने 200 माइक्रॉन वाला PPF किया था, वही उनको हमारे पर्सनल ब्रांड दैट इज आर्मिंडा का यूज़ करके ही ये गाड़ी के ऊपर PPF फिर से करवाना है। तो प्रोसेस में आपको पूरा दिखाऊंगा PPF कैसे निकालेंगे। निकालने में उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एकदम ही फ्रेश है, इसको हार्डली 24 घंटा भी नहीं हुआ है PPF होके, तो पूरा निकालेंगे और हम लोग हमारे ब्रांड में फिर से PPF करेंगे। प्रायर जो हम लोग काम करने वाले हैं उसके पहले मैं आपको एक बार थिकनेस जो है गाड़ी का, अभी फिलहाल जो गाड़ी के ऊपर PPF लगा है उसका कितना है मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो 305। जब ये गाड़ी हम लोग हमारे ब्रांड में करेंगे तभी इसका थिकनेस जो है आप देख लेना। थिकनेस जो है गाड़ी के ऊपर अच्छा रहना बहुत नेसेसरी है इन केस ऑफ PPF, और आपको भी ड्राइव करते टाइम ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होगी क्योंकि मुंबई जैसे अल्ट्रा ट्रैफिक एरियाज़ में ये सब गाड़ी चलाना मतलब बहुत बड़ा टास्क रहता है। गाड़ियाँ 100% कहीं ना कहीं से घिसती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम लोग आपका हर एक क्वेरी जो है हम लोग कमेंट में या फिर पर्सनली कॉल करके रेक्टिफाई कर देंगे। चलिए वीडियो शुरू hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life, but I got so much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time, but please don't stay the night. Don't try to change my mind, baby, please don't stay the night. I must do what's right. She was laying beside me, she know what she wanted, I can never turn her down. Oh, I probably should have kicked her out by now, but
But you're the finest of them all. Make me lose my self-control. All I wanna do is make you feel alright. You drive me crazy, turn me on, and that's the reason I'ma let you go. 'Cause you and I both know that we can't keep it quiet. So please don't stay the night. Don't try to change my mind. Please don't stay the night. Almost do what's right. Don't make me ask you twice. Oh, don't stay the night. Don't try to turn it to a fight. You know I love you by my side. Just don't stay the night. ये देखो इसके ऊपर ना इन लोगों ने पीपीएफ जो है बीडिंग नहीं निकाल के किया हुआ, इसीलिए ये सब स्क्रैचेस आए। ये देखो सब ब्लेड के निशान है, ये देखो यही सेम मार्क्स इधर भी है। ये देखो सेल लाइट भी निकाला नहीं था। So come here, baby, listen close. Hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. But I got so much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time. But please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night. Almost do what's right. Don't make me ask you twice. Ooh, don't stay the night. Don't try to turn it to a fight. You know I love you by my side. Just don't stay the night. Almost do what's right. I'm done being polite. Ooh, don't stay the night. She'll always find a way around it. I thought she'd be gone, but when I woke up in the morning, she was laying beside me. She know when she wanted. I can never turn her down. Oh, I probably should have kicked her out by now. But you're the finest of them all. Make me lose my self-control. All I wanna do is make you feel alright. You drive me crazy, turn me on, and that's the reason I'ma let you go. 'Cause you and I both know that we can't keep it quiet. So please don't stay the night. Don't try to change my mind. Please don't stay the night. Almost do what's right. Don't make me ask you twice. Oh, don't stay the night. Don't try to turn it to a fight. You know I love you by my side. Just don't stay the night. Almost do what's right. I'm done being polite. Oh, don't stay the night. ये BMW जो है फाइनली रेडी हो गई है। मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये गाड़ी के ऊपर पहले से पीपीएफ किया करा था, बट आपने वीडियो में देखा रहेगा कितना गंदी तरीके से एप्लीकेशन किया गया था। बहुत जगह पे ब्लेड के मार्क्स भी थे, तो वो हम लोगों ने अच्छे से रेक्टिफाई करके अभी हम लोगों ने पूरा ओपन करके जो है गाड़ी पीपीएफ किया है। उसकी वजह से पूरा सीमलेस एंड एजलेस एप्लीकेशन हुआ है। उसकी वजह से आपको कहीं भी समझेगा नहीं कि गाड़ी के ऊपर पीपीएफ हुआ है, और गाड़ी का आप शाइन चेक कर सकते हो, काफ़ी अल्टीमेट है। आपने भी अगर नई गाड़ी ली रहेगी तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि ये पीपीएफ जो है 100% आपकी गाड़ी के ऊपर को करवाना चाहिए। आपके गाड़ी को छोटे छोटे स्क्रैचेस हो गए, स्वोर्स, कंटामिनेशन से गाड़ी को 100% प्रोटेक्टेड रखेगा। उसी के साथ आपकी गाड़ी को एक एक्स्ट्रा ग्लॉस भी ये प्रोवाइड करता है। बट करने से पहले जहाँ से भी आप करोगे वहाँ पे एक बार थरोली जाके चेक करिएगा, उनको प्रोसेस क्या है वो पूछिएगा, वो लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। कॉस्ट कटिंग के नाम पे थोड़ा बहुत पैसे के बचाने के चक्कर में गाड़ी की पूरी वाट मत लगाना। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि गाड़ी करते टाइम 100% गाड़ी अगर खोल दोगे, जितना खोल दोगे उतना एप्लीकेटर को भी आसान पड़ जाता है। उसी के साथ आपके गाड़ी का एप्लीकेशन भी काफ़ी सिमलेस हो जाता है। बट खोलना वाला भी प्रोफेशनल चाहिए, तो खोलते खोलते कुछ भी टूट गया तो वो भी अपने गले में आ जाएगा। ये सब कामों के लिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि किसी प्रोफेशनल एप्लीकेटर के पास से ही आप काम कराओ, तो ही आपकी गाड़ी को फिनिशिंग भी मिलेगी और आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आया रहेगा तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा गाड़ी में आपको ये ग्लॉस जो है वो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।
should've